Salam everybody, welcome to Physics with Noshir and we're discussing this paper. Now state and explain whether D or B is the larger force. D is larger since the object is accelerating as clearly mentioned in the question. One possible cause of the backward force could be friction between the tires and the road. You could even mention air resistance. The weight of the trolley is 300,000 and they're asking for the mass. Divide that by 10 so you get 30,000 kgs. Part 2 acceleration, F is equals to ma, resultant force is 15,000. Divide by 30,000 and you will get your acceleration as 0.5. Worth mentioning over here is when you guys use F minus F is equals to ma, this F is the forward force, small f is the friction force, m is mass, and a is acceleration. But if in the question they give you the resultant force, that means that they're giving you the value of this minus this, because forward minus friction is resultant force. So resultant force can also be equal to ma. So this 15,000 is actually forward minus friction. Later the lorry turns at a constant speed around a corner. Now you should know whenever you're moving in a circle, your force is always towards the center of the circle. Let's say this is the center and you're moving that way. So now your object is here, the force is going to be here. And whatever the direction of force will be, that will also be the direction of acceleration. Now the question is, why is the object accelerating even though the speed is constant? So can you notice that over here you were moving like this? At this point you're moving in this direction. So in a circle, your direction is constantly changing. And if your direction is changing, what does that mean? That means that your velocity is changing. And if your velocity is changing, that means the object is accelerating, although the speed is constant. But acceleration is not rate of change of speed. Acceleration is rate of change of velocity. And velocity depends on direction. And since your direction is changing, your velocity is changing, hence object is accelerating. The unit for pressure is pascals. Now they've given you this graph and they want you to sketch more points for this volume range. So I made a table for you. Number one, pressure is inversely proportional to volume, as you all know. So if you double the volume, like 2V, what should happen to the pressure? The pressure should be halved. If you halve the volume and pressure have an inverse relationship. अगर आप वॉल्यूम को हाफ करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा. So 0.5V पे 2P, 2V पे 0.5P, you make these points and you plot a curve because this is an inverse relationship and inverse relationships are always non-linear. So in inverse relationships, you always make this curve. Now when you place more metal weights on the top of the syringe, what's going to happen? They're going to exert more pressure on the piston. As a result, the gas will be compressed, which will cause the molecules to hit more frequently, and this creates a large upward force on the piston, and that's how they're able to support more weights. So if you were to picture this is the piston, right? Now when you will add more weights, what's going to happen? It's going to increase the downward force, and let's say the piston is going to come here. What will that cause? That will cause the molecules to be compressed in a tighter space. It's like आप उनकी जगह कम कर दो, molecules उतने ही हो तो क्या होगा? Collisions बढ़ जाएंगी. Due to those increased collisions, there will be a large force which will be upward and that will balance these extra weights. Question number 3, part A, they ask you to make the field lines from north to south. These are the field lines. And now when you put the soft iron and the paper clips fall off, the reason for that is the soft iron concentrates all of the field lines inside it. It does not allow the field lines to escape because iron causes a shielding effect as the field passes through soft iron, and the paper clips are not attached to the soft iron. They're actually connected over here to the cardboard box, hence they fall. If the paper clips were attached to the soft iron, they would have remained attracted because the soft iron will magnetize and the paper clips will also magnetize. But in this question, the paper clips are not attached to the soft iron. They're attached to this cardboard box. Question 4, what is meant by critical angle? It's the angle of incidence for which the refracted ray makes 90 degrees with the normal, which means that the angle of refraction should be 90 degrees. Calculate the refractive index. Refractive index is 1 over sine C, and refractive index turns out to be 2.46. And the critical angle for diamond is given to you as 24. Must remember that formula. Now, they've given you this diagram and they're asking you to complete the path inside. So this ray is coming in. This angle is 70. I made the normal over here. Normal is always perpendicular to the surface. So this is 90. So this is going to be 20 degrees. Now 20 degrees, is it more or less than the critical angle? It is less than the critical angle. So for internal reflection to happen, total internal reflection to happen,
your angle of incidence needs to be more than the critical angle. But here the angle of incidence is 20. It is less than the critical angle, so the ray will refract out, meaning it'll just leave this diamond and go out. So if there was no medium change, the ray would have gone straight, right? But because it's entering into air, in air you know it should bend away from the normal, that's why it bends away from the normal. And the path that you will show is this. This is just to make you understand that it's bending away from the normal. Don't make it inwards, make it outwards, because your angle of refraction is going to be this angle over here. Now, in the second diagram, it comes in at an angle of 45 degrees to this line. So when you make a normal, this angle is also going to be 45 because this is 90. Now your angle of incidence, which is 45 degrees, is more than your critical angle, which was 24 degrees. So hence, total internal reflection will occur. So at this point, the ray will not refract out. It will totally internally reflect. And reflection mein reflection ke laws aate hain. So you know that this is the normal. This is angle of incidence. So this is going to be your angle of reflection. And it's going to reflect internally, reach this point. Again, when you make a normal, this angle will be 45. Again, 45 is more than 24. So how do I know that this angle is 45? Because this is 45. This is a straight line. This is a normal. This is a normal. When these two normals will meet, what will the angle be between them? This will be 90. So sum of the angles is 180. So what will this angle be? 45 plus 90 plus x equals 180. X will be 45. Again 45 is greater than 24. So यहाँ पे refraction नहीं होगी, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये फिर total internal reflection होगी. It'll get reflected. This is angle of incidence. So this is going to be your angle of reflection, and it's going to go out from here, and it's going to go straight out, because when a ray is incident on the surface perpendicularly, it passes straight undeviated. How do you know that the two things are uncharged? Because you can see equal number of positive and negative charges on both. Now describe how does the rod become negatively charged? Because due to rubbing, heat is generated, and the negative charges, which are the electrons, they move from the cloth to the rod, because the rod is negatively charged. And always remember, you always mention the movement of electrons, because the electrons get transferred, positive charges don't get transferred. If the electron transfers from here to here, this side becomes negative, this side becomes positive, but it's always the movement of the electrons which is mentioned, not the movement of positive charges. Simple experiment to show that the rod is charged. You just take some small pieces of paper. Paper is very light. That's why we do this experiment with paper. You bring the charge rod close to it. What's going to happen? The paper will get attracted to this rod, which will show that this rod is negatively charged. Why will the paper get attracted? Because the positive charge and the negative charge on the paper will get differentiated or polarized. वैसे तो paper का piece was neutral, but the moment you bring in a negative charge close to it, so what's going to happen? The electrons are going to move to the downside of the paper, leaving behind a positive on the upper side of the paper, which is closer, and this will cause a force of attraction, and the paper will jump up because the paper is extremely light. So it's easier to do. I would not suggest using a metal ball, because you don't know how heavy a metal ball would be. Although that could also be an experiment where you could say, I can bring in a charged metal ball and bring this rod close to it. If the metal ball is too heavy, although there will be a splitting, if let's say this is negatively charged, you will have positive charges on this side, negative on this side. But how big a deflection there will be, that really depends on the weight of this and the mass of this ball. So that's why I did not use this experiment, although this can also be an experiment. Name a source of background radiation apart from cosmic rays, rocks and soil. One effect of background radiation, that's on the count rate. Number of protons and number of neutrons, it's helium-4 so 2 protons, 2 neutrons. How the atmosphere reduces the number of alpha particles. You know, alpha particles have a very small range in air, so they get absorbed by air. You can say they cause ionization in air, etc. Now I'll come on to question number 5, part 5 at the end, because I need to explain this in detail. Let's go to part B first. Primary cosmic rays cause carbon-14 in the atmosphere. Half-life is 5,700 years. What is meant by half-life? It is the time taken for the number of nuclei or the number of atoms to half
of the initial value. The time taken for the number of nuclei to half of the initial value. Whatever your original number is, usko आधा कर दें, उसमें जितना time लगता है, that's half life. Now, they're saying that you have a specimen which contains 25,000 atoms. An identical specimen taken from a living tree is found to contain 200,000 atoms. So, what is the age of this specimen? So, if when this was living, it had 200,000 atoms, and now it has come down to 25,000 atoms, how many years have gone by? So 200,000 atoms से start करो, half करो 100,000, half करो 50,000, half करो 25,000. So how many half lives have you undergone? 1, 2, 3. So the age of this specimen is 3 half lives. Basically, when it was alive, it had 200,000, then it passed away, and then it had 25,000 particles after some time. Now, how much time has elapsed? 1, 2, 3 half lives. Half life is 5,700 years. So 3 into 5,700 gives you 17,100 years. In the last part, they're asking, why is it not possible to use the amount of carbon-14 to date a specimen that is 570,000 years old? Because if you look, the half-life is 5,700 years. If it is 570,000 years old, that means it's undergone 100 half-lives. Now, you can clearly see in 3 half-lives, you've gone from 200,000 to 25,000. In the next 3, you'll go from 25,000 to 12,500 to 6,000. Imagine what's going to happen after 100 half-lives. This number is going to become so small, it's going to become out of your range of measurement. So very little carbon will be left at the end. Or you could say that the amount of carbon left will be very small, hence it will become very difficult to measure. Focus here, यहाँ पे focus करो. अभी जो सवाल करना है उसे focus करो. Second finger पे current लिखें, first finger पे M लिखें और thumb पे force लिखें. Please write it down. On the second finger, write current, first finger write M, and thumb पे force लिखते हैं. सही है, प्लीज लिखें, मैं भी लिखता हूं आपके साथ. All right, here you go. So on the second finger, I am writing I. On the first finger, I am writing M. And on the thumb, I'm writing F. बिल्कुल एग्जाम में भी एग्जाम हॉल के अंदर जाके लिख सकते हो. So please लिखो I, M और F. लिख लो. I'm doing this for you, वरना मुझे करने की जरूरत नहीं है, to be very honest. मुझे ये याद है, but आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी करें साथ साथ. अच्छा, आप बड़े गौर से सुनना. M क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? I'm going to lift my page for you. This is my magnetic field. This is my page. इस पेज के ऊपर ये सवाल बना हुआ है. सही है? You can see this question right now. Now, the first finger, I'm doing it with your perspective. The first finger, M wali finger, should it point into this way, or upwards? First finger किधर point करनी चाहिए, ये बताएं. So M wali finger should point into the page. Got it? Like this. Clear है सारे? First finger should point into the page. अब मुझे बताओ, कोई बंदा अपना हाथ यूं खोल देता है, मेरी करंट मेरी तरफ आ रहा है. In the question, is the current going towards me? Look at the question. ये क्वेश्चन में आपको आई की एरो बनी हुई नजर आ रही होगी, ये बनी हुई नजर आ रही है. The current is not pointing towards me, right? So आपकी जो second finger है, that should not be pointing towards you. It should be pointing left to right. So paper, आपने magnetic field, चलो. Look at this. So doing it from your perspective, magnetic field is this way into the page. Current
is going this way and the force is up. आप लोग भी सारे एक काम ये करो, if you get stuck, right? तो आप अपने पेज को अपने सामने यूं कर लो. Pick up the page and put it in front of you like this. जैसा मैंने रखा हुआ. अब मेरा magnetic field into the page है तो मैंने first finger into the page कर दी. My current is going towards that side, so my second finger is pointing towards that side. ये देखो मेरी second finger is pointing towards that side. And where is my thumb pointing? My thumb is pointing up, so the force is up. Is this clear? अगर आप IMF अपनी उंगलियों पे लिखें, आपका गलत नहीं हो सकता ये. IMF अपनी उंगलियों पे लिखो, गलत नहीं हो सकता. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अपना पेज अपने सामने रखो. जरूरी एग्जाम में भी आप पेज को अपने सामने यूं कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर ब्लॉकिंग इट. सो सामने रखो अपने. असबार लेफ्ट हैंड से करना है, राइट हैंड से नहीं करना, लेफ्ट हैंड से करना है. फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज एंड करंट इज पॉइंटिंग टू दैट साइड. करंट, मेरा करंट यूं जा रहा है तो करंट को, करंट की तरफ, आई वाली फिंगर करंट की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ आनी चाहिए. Force will be towards the top of the page. जी, अब बताएं. जी उबैद. उबैद बोले. सही. जब जी. आप जो आपने में लिखा है फर्स्ट फिंगर को वो नीचे जाएगी, जो आई की जो करंट की डायरेक्शन जो उससे की सीध में जाएगी और जो फोर्स जाएगी ऊपर जाएगी. सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो गया उबैद. आपने अपनी उंगलियों पे लिखा था. जी जी. ओके परफेक्ट. बस उंगलियों को साथ में अलाइन करना है. अब सुन लो प्लीज, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज क्या होता है. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज होता है. सो if this is my page, right? Into the page means you have to literally point into the page. Out of the page means you literally have to point out of the page. Into the page का मतलब है literally into the page. Okay? अब मैं अभी वो सारी बातें करता हूँ. मैं ज़ैनब अभी डिटेल में जाता हूँ. मैं पहले ये बेसिक चीज जो है, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, IMF, ये अप्लाई करना आ गया सबको. सबकी फोर्स आई है ऊपर की तरफ या नहीं आई? Okay, so that means that this charge particle stream is going to turn upwards. अगर आप मेरी वीडियो खोल के देखोगे जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो उसके अंदर भी यही मैंने डिस्कस किया हुआ. सही है. तो उसके बाद प्लीज वो वीडियो देखना और फिर सवाल करना. तो हम कहेंगे जी कि इस जो भी ये करंट की स्ट्रीम आ रही थी, उसके बाद फोर्स ऊपर की तरफ लगी, जिसकी वजह से ये इधर टर्न कर गया. अब how much deflection doesn't matter because we're not discussing mass, so आप इसको इधर से डिफ्लेक्ट करा लो या इधर से करा लो, फर्क नहीं पड़ता हमें. अब एक बात जो याद रखनी है वो ये है. अब मैं आ रहा हूँ in terms of charges. In terms of charges, what this means is, याद रखो, current is always defined as the flow of positive charge. So if current is going to that way, your positive charge will also be going that way. याद रखना, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है. और अगर वो आपको नेगेटिव चार्ज दे दे तो नेगेटिव चार्ज याद रखो हमेशा करंट के ऑपोजिट फ्लो करता है. व्हाई? बिकॉज the current that we consider is conventional current. Conventional current is always the flow of positive charge. So याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज देता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले करंट बनाने, क्योंकि आपने सेकंड फिंगर पे क्या लिखा है, सेकंड फिंगर पे आपने करंट लिखा है, चार्ज नहीं लिखा. सो जब भी वो चार्ज देगा, याद रखना मेरी बात, जब भी वो चार्ज देगा, पहला काम आप ये करोगे, उससे करंट का डायरेक्शन निकालोगे, फिर ये रूल आएगा. Are you guys with me so far? उम्र दैट्स समथिंग एल्स. हमसे बात करें कि करंट जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है बाय पॉजिटिव चार्जेस. सो लेट मी गिव यू गाइस अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं. मैं आपसे कहता हूं, दिस इज अ बॉक्स
This box has a magnetic field into the page. और मैं आपसे कहता हूं that you have a negative charge which is flowing into the field from this side. So मुझे ये बताएं, जब ये नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो ये कहां जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज है, यहां से फ्लो करता हुआ आ रहा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करेगा तो ये कहां जाएगा? अब वापस आ जाओ, आपके रूल में कहीं पे चार्ज लिखा हुआ है या करंट लिखा हुआ है? बिफोर यू जंप टू योर आंसर्स, रूल के अंदर करंट लिखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को पहले करंट बनाओ. मुझे बताओ, will I point my current in the same direction or opposite direction? Current. Would current be in the same direction or opposite? Opposite direction. So सबसे पहली चीज, आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए. Where is your magnetic field pointing? Where is your magnetic field pointing? Your magnetic field is pointing into the page. So अगर ये मेरा पेज है और ये मेरी M वाली फिंगर है, M वाली फिंगर को into the page कैसे? मुझे बताओ, is this into the page? ये देखो मेरा पेज भी नजर आ रहा है और ये फिंगर है. Is this into the page? बताएं, बोले, आपको मेरा पेज भी नजर आ रहा है, आपको मेरी फिंगर भी नजर आ रही है. Is this into the page? No, this is not into the page. पेज ये है. Into the page का मतलब होता है literally into the page. Out of the page का मतलब होता है out of the page. ये जो मैं ये कर रहा हूं, ये क्या है? This is top of the page. Do you see? This is the top of the page. हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, आप अपनी उंगली यूं खोल के बैठे हुए होंगे, फिर आप कहेंगे जी मुश्किल है. मुश्किल नहीं है, आप अपनी फिंगर का डायरेक्शन सही नहीं कर रहे. वो इनटू द पेज किस तरह समझाया आपको कि इनटू द पेज का मतलब है कि भाई इसके अंदर, इनटू इनटू द पेज. सही है. सो इनटू द पेज इज means your M finger is pointing into the page. Are you all clear on M? M ने अंदर की तरफ पॉइंट करना है. क्या सारे इस बात पे क्लियर है? पेज आपका जहां पे भी अपना पेज अपने सामने करो यूं, पेज अपना सामने रखो यूं, आपका M finger should be pointing into the page. अब करंट I वाला फिंगर should point in the direction of I, orange I जो आपने बनाया. So M is into the page, second finger is pointing in the direction of I. आपका जवाब आना चाहिए, थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट करना चाहिए. क्या आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है? तो इसका मतलब है कि आपको ये रूल आ गया. This negatively charged particle is going to turn upwards like this. So the force on the charged particle is going to be upwards. Does that make sense? The force of the charged particle will be upwards. एक और सवाल करें. मैं आपसे कहता हूं, जी नबिया, मैंने ये वजिया मैंने इधर बता दिया है, इधर गौर से देखो. करंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का वही डायरेक्शन होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा होगा. ये लिख लो. अहमद बिलाल ने मुझसे पूछा है कि ये आप इस फोर्स को क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज या अपवर्ड्स? दोनों ठीक है, दोनों से मुराद एक ही है कि पेज के ऊपर जा रहे हो, पेज के अंदर नहीं जा रहे. इनटू द पेज ना लिख देना. फोर्स इज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. So guys, let's say this is your magnetic field and I say that the magnetic field is out of the page. Magnetic field is out of the page. और मैं आपसे कहता हूं that I have a positively charged particle which is coming in from this side. Solve करें जी, बताएं where will this turn? शाबाश.
Sena, whenever they ask you to define current, current is defined as the rate of flow of positive charges. प्लीज अपने माइक पे आ जाओ, मुझसे आमिर आप पूछ लो क्वेश्चन जो भी आपका. So, where will the positive charge go? Well done, everybody. Most of you have gotten it right. Most of you have gotten it right. पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको खुद जवाब समझ आ जाएगी. So I am going to go to your perspective. So आपका ये perspective है कि ये पेज आपके सामने पड़ा है. Magnetic field M वाली finger should be pointing out of the page. Magnetic field M वाली finger should be pointing out of the page. Current positive charge is going that way. ये देखो. You can see that the positive charge is going that way. So I'm putting it here. My current finger is pointing that way. Magnetic field is out of the page. Force is this way. My force is this way. This is down the page. Is it clear? So put it in front again, like this. Magnetic field is out of the page. लामिया M वाली फिंगर आउट ऑफ द पेज हो गई. लेफ्ट हैंड से करना. करंट का डायरेक्शन वही जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है. हो गया. करंट का डायरेक्शन वही जो पॉजिटिव चार्ज यूं जा रहा है, तो मेरा करंट भी यूं ही जा रहा है. एंड द फोर्स इज नाउ गोइंग टू बी डाउनवर्ड. हम मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं. नहीं हो रहा. Lamia, can you come on the mic? Can you come on the camera? जी लामिया. Yes, sir. बच्चे कैमरा ऑन कर लोगी? Sir, I can't. मैं आपको भी परमिशन दे देता हूँ. सादिन आप भी देख लेना, जिसका अपवर्ड हो रहा है वो देख ले. Lamia, just give me a sec. Lamia, you should see the camera option now. एक मिनट. नहीं Lamia, you need to bring it in front of you because we need to see what you're doing. हाँ. सवाल किधर है? माइक ऑन रखो. आप ये बताएं, आपका पेज किधर है? नीचे है? नहीं सर, सामने. सामने लाइक इस तरह, जिस तरह मेरा ये सामने इस तरह है सामने. नहीं सर, जिस स्क्रीन पे मैं हूँ इसी स्क्रीन पे है. अच्छा, इसी स्क्रीन पे. ओके. सो अगर उसी स्क्रीन पे है तो फिर तो काम आसान है. काम आसान नहीं है, मुश्किल है. कैन यू पुट योर पेज लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू? रख सकती है? हाँ, रख दिया यूं. Yes. अब प्लीज गौर से देखना. अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पंखे की तरफ होना चाहिए. फर्स्ट फिंगर शुड बी टुवर्ड्स द फैन. Yes. हो गई. अब सेकंड फिंगर पे तुमने करंट लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है. Yes. तो आई का डायरेक्शन जरा बनाओ ना. देखो तुमने उंगलियां चेंज कर दी हैं अपनी. मेरी बात सुनो, बंद कर दो हाथ अपना. क्लोज योर हैंड. The problem that you're making is, and look at me very carefully, what you're doing is when you are twisting your hand, तो अपनी उंगलियों की ओरिएंटेशन चेंज कर देती हो. अपनी उंगलियों को यूं ही रखना है. उंगलियों को यूं ही रखना है. रख सकती हो यूं? ओके सर, हो गया. हो गया. तुम्हारा मसला ये आ रहा है कि तुम जब अपना हाथ घुमाते हो तुम्हारी उंगलियां भी घूम जाती हैं साथ उसके. उंगलियों को लॉक्ड रखो. ओके सर, थैंक यू. नो प्रॉब्लम.
चलें जी. So I hope के thank you Lamia for sharing your video. Let me just put you off the camera. Yeah. So भाई जिसको नहीं समझ आया वो कैमरा ऑन करे, आ जाए कर ले. Yes, Natalia, go ahead. Force will be downwards. Natalia, go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर आप पहले पेज को इन फ्रंट ऑफ मतलब आप अपने फेस के सामने रख रहे थे. अब नहीं, आप पेज आप ऐसे मैं बताता हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस देखता हूँ नतालिया. सर, लेकिन अगर हम कन्वीनियंस देखा खराब हो जाए फिर. नहीं, कन्वीनियंस देखनी चाहिए ना. अब मुझे अगर यूं सामने रख के मुझे हाथ यूं टर्न करना मुश्किल है तो मैं अब पागल हूं, मैं अपने पेज को यूं नहीं रख सकता. तो सर हम पहले वाले में जब था तो जब इनटू तो द पेज पहले थी वाले में वो मैंने आसान, पहले वाले में आसान था यूं करना. पहले वाले में मुझे आसानी थी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द पेज, सो आई कुड हैव इजीली. जब फर्स्ट वाला देखो तो मैं सामने रख के बड़े आराम से इनटू द पेज पॉइंट कर सकता हूं. मैं इसको सामने रखूं और अपना हाथ यूं टर्न करूं, कोई अकल मानती है इस बात को? सो ये तो आपने जज करना है कि आपको आसान क्या लग रहा है. मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. इनटू द पेज हो तो पेज को हमेशा सामने रख लो, आउट ऑफ द पेज हो तो पेज को नीचे रख लो. ठीक है सर, थैंक यू. सही है. सो आउट ऑफ द पेज हो ना तो आउट ऑफ पेज को नीचे रख लो और नीचे रख के सॉल्व करो. लाइक कीप इट हियर. अब फाइनल क्वेश्चंस. नहीं ज़ारा, डाउनवर्ड फोर्स है. डू यू वांट टू कम ऑन द माइक? अब्दुल रहमान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सर. मैं बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं मैं उसी तरह ही कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरी जब आप इनटू द पेज होता है तो मेरी मैग्नेट. I'm promoting you to the panelist. Can you turn on your camera now? You should see the camera option. हाँ जी, माइक अपना अनम्यूट कर लो. यस सर. ओके, हम यही सवाल सॉल्व करने लगे. ओके पेज किधर है? सर, इस वक्त टेबल पे पड़ा है. टेबल पड़ा है. कैमरा जो है ना जरा अपना सामने कर लो ताकि सो आई कैन सी यू फ्रॉम द फ्रंट. कैन यू पुट दैट इन फ्रंट? यस सर. ठीक है, चलो. अब पेज तुम्हारा जिस तरह मेरा पेज यहाँ नीचे पड़ा हुआ है उसी तरह तुम्हारा पेज नीचे पड़ा हुआ है. इज दैट राइट? यस सर. सही है. अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज है? सर आउट ऑफ द पेज. तो फर्स्ट फिंगर तुम्हारी मुझे छत की तरफ नजर आनी चाहिए. एम सर वाली ऐसे. फिंगर. आर यू यूज? हाँ बिल्कुल. आर यू यूजिंग योर, तुमने IMF लिखा है अपनी उंगलियों पे? जी सर. IMF लिखा है अपनी उंगलियों पे? नो सर. क्यों नहीं लिखा? सर वो मेरे हाथ पता गंदे हो नहीं सर, जाएंगे. वाईफाई को कोई प्रॉब्लम है सर. वो उसमें लगता है उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था. जरा काइंडली जल्दी से अपनी उंगलियों पे IM और F लिखो जल्दी से. ओके सर. सर 1 सेकंड. या जी आयान, तब तक आप ना सवाल पूछो जब तक ये वापस आ रहा है. हाँ जी. सो जस्ट टू क्लैरिफाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिलेबस में आप लोगों के है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपके सिलेबस में नहीं है. राइट हैंड ग्रिप रूल सिलेबस में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सिलेबस में नहीं है. So in a note, please write this down. यस सर. जी पहले लिख लो. लिख लिया? यस सर. Alright. अब जी, सो राइट हैंड ग्रिप रूल के लिए ना आप लोगों ने वीडियो देखनी है. वीडियो अपलोड हुई हुई है. बिल्कुल. इट्स ऑल्सो इन IGCSE. So the video has been uploaded. You will watch it from there. Make sure that you guys watch it. मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करा दिया आप लोगों को आज. अच्छा, Hayat, please stay focused here because we're talking about magnetism. Abdul Rahman, sorry Abdullah, अब अपना कैमरा Yes, सामने sir. करो. यस सर. IMF लिख लिया? यस सर. अब
IMF में याद रखो कि M क्या है? M is the first finger, right? Yes, sir. तुमने दिखाओ अपनी फर्स्ट फिंगर टूवर्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई. डन हो गया. Yes, sir. अब योर सेकंड फिंगर शुड शो करंट. करंट वाली फिंगर खोलो. अब मुझे बताओ करंट तुम्हारा लाइन हो गया विद द पॉजिटिव चार्ज. Yes, sir. इज द थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? फोर्स तुम्हारी तरफ ही है ना. हम भी ये दिखा रहे हैं फोर्स तुम्हारी तरफ है. सर काफी स्ट्रेंज बात है, जब मैं कर रहा था तब मुझसे तो नहीं हो रहा था. अब हो गया. Yes, sir. Thank you very much. अब एक काम करो, उधर ऊपर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. Yes, sir. जल्दी से पहला सवाल कर लो. पहला सवाल खोलो. When you look जी, at the first question, इसके अंदर magnetic field is into the page. Yes. So अपने पेज को जब into the page आया करना, सामने कर लिया करो स्क्रीन को अपनी. अपने पेज जी, को sir. सामने कर लो. पेज को सामने पकड़ो यूं. जब into the page आए तो पेज को सामने पकड़ो. Is the page in front of you right now? Mic unmute करो. Oh, sorry, sir. मैं कह रहा था. Yes, sir. It's in front of me. So yeah, are you holding it up front like that? Yes, sir. Now, magnetic field, first finger should be pointing into the page. Yes, sir. Done? Yes. पेज के अंदर है. Yes. तुम्हारा पेज किधर? is your page your is the page your phone? Yes, sir. अच्छा ठीक है. So your first finger is pointing into the page. Your second finger should be pointing in the direction of current. Okay, sir. कर रहे? Yes, sir. आप बताओ थंब किधर पॉइंट कर रहा है? नीचे की तरफ या ऊपर की Upward. तरफ? तो फोर्स इज अपवर्ड्स. जी, sir. Sir, thank you very much. नो वरीज. हैंड ट्विस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है ना. हैंड ट्विस्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं. मैं इसलिए तो आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं कि इनटू द पेज है सामने कर लो, आउट द पेज है नीचे कर लो. आपका